મિડ ન્યૂઝમાં સૌપ્રથમ વાત વરસાદની અને વરસાદને લઈને મહત્વપૂર્ણ આગાહી અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે। આપણે જણાવે કે આ આગાહી આગામી દિવસોને લઈને છે અને આગામી દિવસોની અંદર વરસાદના ગુજરાતની અંદર શું છે હાલ તેને લઈને આ મહત્વપૂર્ણ આગાહી છે કે રાજ્યમાં હજુ પણ વરસાદનું જોર યથાવત છે। હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે કર્યું અનુમાન કે 4 થી 9 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદ પડી શકે છે। उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में भारे वरसादनी शक्यता है। आ उपरांत आगामी 19 सप्टेम्बर सुधी वरसादनी सिस्टम सक्रिय रहेशे। सप्टेम्बर तारीख 4 થી 8 કે 9 में गुजरातना घणा भागों में सौराष्ट्र घणा भागों में दक्षिण गुजरातना घणा भागों में भारे वरसाद थवानी शक्यता है। उत्तर गुजरातना भागों में मध्य गुजरातना भागों और पूर्व गुजरातना भागों में भारे वरसाद थवानी शक्यता रहे। जेमां कोई भाग में मुसळधार वरसाद थवानी शक्यता रहे। तारीख 4 થી 8 9 में जोवा जईए तो लगभग आ सिस्टमना कारणे पूर्व गुजरातना भागों में भारेथी अति भारे वरसाद थवानी शक्यता रहे। नवरात्रि में पण रहेशे वरसादनुं विघ्न। नवरात्रि में हळवाथी मध्यम वरसादनी अंबालाल पटेलनी आगाही छे। छठ्ठा नोरताथी दशेरा दरमियान वरसाद पड़ी शके छे। खेलैयाओनी मजा वरसाद बगाड़ी शके छे। लगभग नवरात्रि की शुरुआत में कोई भाग में वादळवायु रहे और नवरात्रि छठ थी दशेरा सुधी में तो कोई भाग में हळवा वरसादी झापटा पड़ी सकवानी शक्यता रहे।